माय नेम इज मुस्कान। सो इन टुडेज लुक मैंने ये सटल सा एंड पार्टी मेकअप मैंने क्रिएट किया है। सो गाइस एज वी नो कि शादी का सीजन आ चुका है और हम सब प्रिटी लगना चाहते हैं, ब्यूटीफुल लगना चाहते हैं। सो मैंने आपके लिए एक छोटी सी मेकओवर वीडियो बनाई है शादी के लिए कि आप ये सिंपल सा गेटअप और ब्यूटीफुल सा ग्लिटरी मेकअप कैसे क्रिएट करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, initially I am using this primer from Swiss Beauty and applying on my face, and also this primer gives me smooth kind of texture, and this is my favorite primer. Now again I am using this concealer from Swiss Beauty and applying on my eyes for creating the base. Now you can see the tip of a brush which I am using, and make sure don't draw your brows with the help of a straight brush. आप हमेशा टिल्ट ब्रश यूज़ करें जैसे मैंने आपको दिखा दिया है। नाउ आई एम अप्लाइंग कंसीलर अराउंड माई आईब्रोज एज यू कैन सी टू गिव इट अ शार्प लुक। नाउ विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश आई एम ब्लेंडिंग द कंसीलर अराउंड माई आईब्रोज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। आई एम यूजिंग दिस हिलारी रोडा किट फॉर क्रिएटिंग माई क्रीज एंड टेकिंग दिस ब्राउन शेड फॉर द क्रीज, एंड मेक श्योर डोंट यूज डार्क कलर्स इन द इनिशियल स्टेप्स बिकॉज इट मे लुक बैड। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये ब्राउन शेड यूज़ किया है और जैसा कि मैंने बताया कि ये लाइट ही लग रहा है, डार्क नहीं लग रहा। सो गाइज टेकिंग दिस डार्क ब्राउन शेड एंड अप्लाइंग इट इन माई इनर कॉर्नर्स एंड आउटर कॉर्नर्स एज यू कैन सी। सो विद द हेल्प ऑफ अनदर ब्रश आई एम मिक्सिंग द brown shades. So guys, let's move on to the very crucial part of my eye makeup. So I am taking this small flat brush and making it red by the help of this makeup setting spray, and this is from Wet n Wild. और जब मैंने ये कॉपर कलर लगाया था मुझे तभी अंदाज़ा हो गया था कि ये लुक बहुत ही सुंदर लुक में टर्न आउट होगा। नाउ आई एम यूजिंग दिस Maybelline जेल eyeliner and applying on my upper eyelid as you can see, and filling the gaps between the eyelashes. I didn't make any wing, and now I am applying this colossal kajal in my lower lid. I am using this curler for curling my lashes. So let's move on to the base. I am using this Expose foundation by In Color, and this is a low to medium coverage foundation which suits me a lot. As you can see, I am applying it by dotting all over my face and spreading it out by the help of sponge. एंड मेक श्योर जब भी आप स्पंज यूज़ करें उसको थोड़ा सा वेट कर लें जिससे वो एब्जॉर्ब ना करे फाउंडेशन को और अच्छे से ब्लेंड कर दे हमारे फेस पे फाउंडेशन को। आई एम अप्लाइंग दिस कंसीलर फ्रॉम स्विस ब्यूटी शेड नंबर 2 एंड फॉर हाईलाइटिंग माई फेस लिटिल बिट एज यू कैन सी, एंड आई एम अप्लाइंग इट in my under eyes, and as you can see I am taking this brown shade which I used before, and contouring my face as you can see. And now I am using the blush from Swiss Beauty, again my favorite brand, blushing my face little bit. I think this is a peach color, I'm not sure. And now I am highlighting up my face with the help of this small brush as you can see, and little bit on my brow bone. So guys, first I take this stick highlighter and applying it on my tip of my nose. Then I'm using Swiss Beauty highlighter and applying all over my face. So guys, then I'm using this lipstick, new shade lipstick, and उसके बाद फिर मुझे लगा कि ज़्यादा ही लाइट हो गया कलर, तो मैंने थोड़ा सा पिंक कलर इसमें मिक्स कर लिया as you can see. And at the last I'm using this Wet n Wild makeup setting spray and spraying on my face. और उसके बाद मैं स्पंज की हेल्प से इसको थोड़ा सेट कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने अपनी ज्वेलरी पहनी और ज्वेलरी पहन के मैं खुश हो गई। सो गाइज दिस इज माई फाइनल लुक। पसंद आए तो
तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सो टिल देन बाय।